दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है. A very good morning to Honorable Speaker, distinguished members and venerable dignitaries. I am Himanshu, hailing from the land of East Champaran, also known as Gandhi's Karma Bhumi. And today, let's talk about the most important topic with full grace and dignity. Union Budget 2026 is a Yuva Shakti budget driven toward Viksit Bharat 2047. Ladies and gentlemen, बजट केवल अंकों का हिसाब नहीं अपितु यह राष्ट्र के भविष्य का खाका होता है. और जब उस खाके के केंद्र में युवा हो तो विकास की गति अपने आप तेज हो जाती है. एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाई दिस बजट इज कंसिडर्ड एज युवा शक्ति बजट. On 1st Feb, sharp at 11 a.m., our finance minister presented the budget with a clear vision, making Yuva Shakti the center of nation building. Swami Vivekananda said, quote unquote, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का सामर्थ्य रखता हूं. Today's India is not just a nation of 1.4 billion people, it's a country where more than 65% of its population is young. This means one simple truth. India's future is not somewhere else, it is sitting in our classrooms, our universities, our ideas, and in our startups. And this budget recognizes that power. अगर घर सजाने का तसव्वुर रखते हो तो आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए. When government talks about nearly ₹2 lakh crore for skill development, it is not just allocating money, it is telling the youth to learn more, create more, and build more. When ₹50,000 crore is dedicated to strengthening the startup ecosystem, it sends another message that the youth of India should not only search for jobs, but also create jobs. Because the vision of Viksit Bharat will not be achieved by policies alone, it will be achieved by innovative minds, courageous ideas, and fearless youths. 2047 का भारत कैसा होगा यह केवल समय तय नहीं करता, यह आज का बजट और आज का युवा मिलकर तय करेंगे. But let us remember something important. The budget can provide resources and policy can give you direction, but only the youth can bring real change. Therefore, असल प्रश्न यह नहीं है कि बजट ने युवाओं को क्या दिया, असल प्रश्न यह है कि हम युवा इस देश को क्या देंगे. If India's youth become skilled, innovative and responsible, then the journey from Budget 2026 to Viksit Bharat 2047 will not remain just a government mission, it will become a national movement. For Viksit Bharat, we need सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास and सबका विश्वास, because when 1.4 billion people dream together, even impossible beats down. In last, I would like to conclude by quotation of our Honorable Prime Minister. He said, quote unquote, युवा केवल देश का भविष्य नहीं, वो वर्तमान की शक्ति है. आज हमें आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ कि किस तरह हमारे सोच में नवीनता आए, कर्मों में प्रतिबद्धता आए और सपनों में विस्तार हो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारतम, जय लोकतंत्र.